Hello everyone, hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. Endao. Today I am going to deal with one of the interesting topic of the matrices, that is characteristic equations or characteristic roots or eigenvalues, or sometimes we call them as latent values also. So before going to the deep study of the characteristic equation or the characteristic roots, I request each and everyone to subscribe this YouTube channel, like and share the videos among your friends and classmates, and press the bell icon to get the further notification or some interesting contents. So now guys, we start the today session, and which is really an important topics in point of view. So today we are going to deal with characteristic equation, which is an important topic in point of view of NET examinations or GATE examinations, or for the semester exam end semester examinations of the engineering students. Okay, so that topic is the characteristic equation, and in this lecture we will learn step by step methodology to find the characteristic polynomial or characteristic equation, characteristic roots or eigenvalues corresponding to a matrices. Okay, so आपने क्या करना है कि लास्ट तक बंधे रहना है दिस वीडियो के साथ में, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है। बीच में बहुत सारी मेथोलॉजी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच बीच में आते रहेंगे, तो सब एक सीक्वेंस में बंधे हुए हैं, आपको पूरी सीक्वेंस कवर करनी है। सो नाउ गाइज वी स्टार्ट फर्स्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ओके, द इक्वेशन determinant of a minus lambda times I equals to 0. This symbol holds for the determinant. Okay, a determinant of a minus lambda I equals to 0. It is an equation. It's called the characteristic equation of the matrix A, where A and I are the square matrices of order n cross n, and lambda is a real number. Okay, sometime it may be a complex number also. Okay, so it is the characteristic equation definition, very simple definition. If someone asks the definition of the characteristic equation, then you will say the determinant of a minus lambda equals to 0 is called the characteristic equation of the matrix A. Okay, and capital A and I are the square matrices of order n cross n, and lambda is a real number. So it is the definition of the characteristic equation. Now we are here some notes. Note number 1, solving determinant of a minus lambda equals to 0, we get n roots, because we will get a n order, n degree equation. Okay, n degree polynomial or n degree equation. So it will have the n roots for lambda, and these roots are called characteristic roots. Remember this thing. If someone asks what or define the characteristic roots or eigenvalues, then you have to tell them the find the roots of the characteristic equation, then these roots are said to be the eigenvalues of the matrix A. Right, now note number 2, corresponding to each eigenvalue, okay, corresponding to each value of lambda, the equation Ax equals to lambda x has a non-zero solution, and this non-zero solution vector has a non-zero solution vector, and this non-zero solution vector is called the eigenvector. It's called the eigenvector. So you can define three definitions here: characteristic equations, and characteristic roots or eigenvalues, and the characteristic vector. Okay, now if capital X R be the non-zero vector satisfying this equation Ax equals to lambda x, or you can say XR be the non-zero vector or eigenvector, but here we are defining the eigenvector, so we will not use term before as eigenvector. Okay, if XR be the non-zero vector satisfying Ax equals to lambda x, where lambda equals to lambda r, and corresponding to the lambda r we have the non-zero solution xr.
or non-zero vector xr, then this non-zero vector xr is said to be the eigenvector of matrix A corresponding to the eigenvalue lambda r. जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले बताया कि ये लेक्चर एक कनेक्टेड लेक्चर से, इसके हर एक टॉपिक हर एक पॉइंट कनेक्टेड है. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर, जो ऊपर डेफिनेशन हमने 3 पढ़ी है ना, तो प्रॉपर आप उनको प्रॉपर तरीके से समझ लें. उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दोनों में फ़र्क होता है भाई. अगर आप लिख रहे हैं ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई. और सिर्फ आप इतना पोर्शन पढ़ रहे हैं है ना, इसका डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल पड़ गया है ना, इसको हम एक पॉलिनोमियल कहेंगे. अब अगर इस डिटरमिनेंट को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो इट विल गिव ए पॉलिनोमियल विच विल कॉल्ड अ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए. वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. ओके, नाउ कम ऑन. Working rule, which is a very important point here. What are the working rule to find the characteristic equation? And either the given matrix for a order of 3 cross 3 or it is 2 cross 3 order matrix. Okay. So what about the working rule? So first we deal with for a 3 cross 3 matrix. If we have given the 3 cross 3 matrix, what about the characteristic equations? So we have the 2 method here. First, I would love to call the method first. That is the characteristic equation. The characteristic equation is determinant of a minus lambda I. When we find this determinant, when we expand this determinant and put it equals to 0, this resultant equation is said to be characteristic equation. It is the first method. And what about the second method? Second method is that the characteristic equation of the 3 cross 3 matrix will be written as lambda to the power 3 minus s1 lambda square plus s2 lambda minus s1 equals to 0. Okay. Lambda to the power 3 minus s1. See here, sign will go alternatively, plus minus. And second thing, s1, s2 and s3. It is s3, okay, not s1. s1, s2 and s3. So what about s1? s1 is the sum of the main diagonal elements of the matrix. मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट है ना, उनको सम कर दो भाई साहब, आपका S1 निकल आएगा. व्हाट अबाउट द S2? सम ऑफ द माइनर्स ऑफ द मेन डायगोनल एलिमेंट्स. जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है ना, उनके माइनर्स निकालो और उनको सम कर दो, S2 निकल आएगा. S3 क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए. मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कर दो, आपका निकल आएगा S3. और S1, S2, S3 की वैल्यू रख दो, आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनके तैयार, फर्स्ट क्लास एकदम. बहुत आसान होने वाला है, बहुत ही आसान चीज़ें मैं आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ यहाँ पे. आपने ये चीज़ें अपने लिख लेनी है. और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. इस लेक्चर से में काफ़ी सारी चीज़ें बहुत आसान तरीके से बताई गई हैं. नाउ वी टॉक अबाउट फॉर ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. ओके, सो मेथड नंबर 1. मेथड 1 क्या होगा? सिंपल सा, आप पहले की तरह जैसे हमने 3 क्रॉस 3 के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0 कैलकुलेट किया, यहाँ भी हम वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं. बट मेथड नंबर 2 फॉर द 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेमडा स्क्वायर माइनस s1 लेमडा प्लस s2 इक्वल्स टू 0. नोट डाउन इन दिस पॉइंट. What about the S1? Same, sum of the main diagonal elements. What about the S2? Determinant of the matrix A. That's it. ये दोनों रख दो, आपका भाई साहब फर्स्ट क्लास आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए निकल के तैयार हो गया. अब देखो, ये थ्योरी अगर आपके हाथ में होगी ना, आपको कोई नहीं रोक सकता कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने से. नाउ वी डील दिस थ्योरी विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन. कम ऑन. सो सॉल्यूशन. What about the question? Question is that find the characteristic equation of the matrix A. We need to find the characteristic equation of this matrix A. Come on. First we write the given matrix. What about the given matrix? The given matrix, we have capital A is equals to 1, 2, 0, 2. That's it. Okay. Now come on. What about the characteristic equations? Okay, so we know that the characteristic equation will be as lambda square minus s1 lambda
and then plus S2 is equals to 0. So what about lambda? What about S1? S1 is simply the sum of the diagonal elements. So we have the two diagonal elements here, 1 and 2. We will sum them. Okay. It is calculated S1. Then put lambda here. What about the S2? S2 is simply the determinant of this 2 cross 2 matrix. So what about the determinant of this matrix is 1 cross 2 minus 2 cross 0, that is equals to 2. Right? So it is 2 equals to 0. So you are getting here lambda square minus 3 lambda and plus 2 equals to 0. So it is the characteristic equations. फर्स्ट क्लास आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल ली भाई. अगर रूट इसमें नहीं पूछा गया सवाल में, अगर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जिनको हम आइगन वैल्यूज़ भी कहते हैं, अगर आपको आइगन वैल्यूज़ निकालनी पड़े ना तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सबसे पहले निकालनी होगी और फिर इसके रूट्स निकाल दो. आप इसके रूट्स निकाल दो, आपकी आइगन वैल्यूज़ निकल आएगी. और इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हैं. तो मिडिल टर्म स्प्लिट में आप सिंपल सा 3 को आप लिख लिए 2 + 1 and then plus 2 equals to 0, and lambda square minus 2 lambda minus lambda plus 2 equals to 0. Okay, now simplify it. Take lambda common from these two terms. Lambda minus 2, take minus 1 common. Lambda minus 2 equals to 0. Take lambda minus 2 common from both the terms. Then you will remaining here lambda minus 1 equals to 0. So you are having here two values of lambda 1 and 2. These are your eigen values for this matrix. Now come on, we understand this theory with the help of another question which is held for 3 cross 3 matrix. Now come on about the solution. So what about the given matrix? So we have the given matrix as given matrix capital A equals to 8 minus 6 2 minus 6 7 minus 4 2 minus 4 and 3. Okay, and what about the characteristic equation? Obviously lambda to the power 3 minus s1 lambda square and then plus s2 lambda and then plus s3 is equals to 0. So now what about the value of s1? S1 is the sum of the diagonal elements, that is 8 plus 7 and plus 3, that is equals to 18. Okay, that is equals to 18. What about the S2? Sum of the minors of the diagonal element. So if I talk about the diagonal element minus, so I will talk about the minors of 8. So minors of 8 will be 7 into 3. So it will be 7 into 3 and minus 4 into minus 4. It is the minor of 8, right? Now come on, plus minor of 7. So I talk about the minor of 7. So minor of 7 will be calculated, remove this row and this column. So you will get here 8 into 3 and minus 2 into 2. Okay, now we talk about the minor of another diagonal element, that is 3. Remove this column and remove this row. So we are left here 8 into 7 and minus 6 into minus 6. Now come on, simplify these. You will get the S2. So 21 and minus it is 16, then plus 24 and then minus 4 and then plus 56 and then minus 36. So what about the resultant? So resultant here we are here 5 and then plus 20 and then plus how much, 20. So you are getting here 45. So it is your S2. So what about your S3 means determinant? So to find the determinant of this matrix, you simply do the simple step here. What need to do in terms, so to find the determinant, first I will write the matrix 8 minus 6 minus 2, 8 minus 6 and minus 2. Okay, sorry, plus 2 and minus 6 7 minus 4. Minus 6 is 7 minus 4 and it is plus 2. Okay, and what about the next? 2 minus 4 and 3. 2 minus 4 and 3. Again repeat these two column here, 8 minus 6 and 2 and minus 6 7 and minus 4. Come on, just multiply the diagonal elements here. Okay,
Now this one and this one. Come on. What about the resultant? So it will be 8 multiplied by 7 multiplied by 3 and then plus minus 6 multiplied by minus 4 and then multiplied by 2 and then plus 2 multiplied by minus 6 and multiplied by minus 4. Okay. Now come on. Minus, what about the anti-diagonal elements? That is this first anti-diagonal, that is 2 into 7 into 2 and then plus minus 4, then minus 4 and multiply by 8 and then plus 3 minus 6 and minus 6. Okay, come on, simplify this, you will get the determinant. 8 से 56 और ये हो गया आपके पास 168. ओके, 56 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 3 6 18 1. ओके, 168. एंड व्हाट अबाउट दिस? यू विल गेट प्लस 6 to the 12. So 12 4 ja 48, right? And what about this? 12 4 ja again 48. Okay, again 48. So come on, what about minus 28, right? What about this? It is, what about this? 126, right? It is about 32 and multiply by 4. Okay, so it is 832 और 4 क्या होगा भाई? 832 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा आपके पास? कम ऑन, 8 एंड 128, राइट? 128 एंड अगेन द माइनस 6 36 36 दूनी 72 और 3 108. ठीक है, 108. सो व्हाट अबाउट द रिजल्टेंट? कम ऑन, व्हाट अबाउट द रिजल्टेंट? सो यू विल गेट हियर 8 8 8 आती है 24, 2 कैरी हो गया आपके पास, 6 4 10 10 6 और 4 10 और 6 16. ठीक है, 1 कैरी 2 एंड व्हाट अबाउट दिस? ये हो गया आपके पास 8 8 16 आती है 24, राइट? 2 कैरी तो 2 और 2 4, राइट? और 144, नो 244, 112, राइट? 244. अगेन चेक इट आउट. 4 4 8 8 16 और 8 24, 2 कैरी तो 2 और 2 4 और 2 6, 2 6. लेट मी चेक इट आउट. कम ऑन, 2 6, राइट? 8 8 16 3 24, 2 तो 2 2 4 2 6. ठीक है, 6 और 1 और 1 2. ठीक है, सो इट इज 0. सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0. ओके, सो कम ऑन, व्हाट अबाउट द characteristic equation? So the characteristic equation is you can write lambda to the power 3 minus s1, that is 18 lambda square, and then s2 means was 45 lambda. Okay, and then s3 means 0 equals to 0. So you have the characteristic equation as lambda to the power 3 minus 18 lambda square and plus 45 lambda equals to 0. So take lambda common, lambda square minus 18 lambda and plus 45 equals to 0. So guys, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ चुकी है फर्स्ट क्लास. ठीक है, अभी आपने करना क्या है, अगर इसको फर्दर आपने सिंप्लीफाई करना है यानी कि लेमडा की वैल्यू निकालनी, तो वो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाएंगे या फिर आइगन वैल्यूज़ कहलाएंगे. तो निकाल लेते हैं लगे हाथ उसको भी. लेमडा, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं आप. ठीक है, 15 3 45 यानी कि 15 प्लस 3 लेमडा एंड प्लस 45 इक्वल्स टू 0. सो लेमडा स्क्वायर माइनस 15 लेमडा minus 3 lambda plus 45 equals to 0. So now simplify it. Come on, lambda, and take the lambda common here, lambda minus 15, and take minus 3 common here, lambda minus 15. Okay, and then equals to 0. Lambda, then take lambda minus 15 common from both the terms here,
So you will get lambda minus 3. So now what about the resultant? You are having lambda equals to 0, 3 and 15. These three are the eigenvalues of the given matrices. Okay, so guys, these are very simple to solve. Okay, just practice once and you can understand it very easily. So I hope you guys enjoyed this video lecture. Okay, so I request each and everyone once again to like and comment the videos. Thanks for watching my content. So see you in the next content with interesting explanation. Thank you very much.